जो डिस्कवर पुंछ का जो इनिशिएटिव था ये बहुत बेहतरीन इनिशिएटिव रहा। इसका मेन पर्पस जो था वो ये था कि जो एक बहुत बड़ा मेनेंस चल रहा है ड्रग्स को लेके, जिसने हमारे बहुत सारे जो आज का प्रेजेंट सिनेरियो है उसमें बहुत सारे बच्चों को इसमें इन्वॉल्व कर दिया है। और इसके लिए जो है हमारे रिस्पेक्टेड अलियास ख्वाजा जी और मुगल साहब ने जो ये इनिशिएटिव लिया है उनके साथ हम सभी लोग खड़े हुए थे और ये हमने एक जगह जगह जाके इसकी अवेयरनेस के लिए जो है ये प्रोसेस रन किया था। उसमें फर्स्ट आज हमारा जो पहला जो है वो टूर रहा है पुंछ से लेके, जहाँ पे हमने डिफरेंट एरियाज़ में जाके स्टे किया और वहाँ थोड़ा सा अवेयरनेस की बात की है कि ड्रग्स से जो है वो किस तरीके से बचा जाए और आने वाली जनरेशन जो है उसको हम किस तरीके से ड्रग्स से बचा सकते हैं। रजौरी से बिलोंग करता हूँ। मैं यहाँ पे आया हूँ डिस्कवर पुंछ, जो एक सोशल मीडिया पे काफ़ी मतलब एक्टिव यूट्यूब पे भी है और फेसबुक पे भी। हम यहाँ पे आए थे कि हमारा यहाँ पे जो है पीर पंचाल रीजन में जो बहुत टूरिज़म का जो है काफ़ी हाई पोटेंशियल है, उसको एक्सप्लोर करने के लिए हम ये चाहते हैं कि हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है और लोकल जो भी NGOs हैं, जो भी ट्रस्ट हैं, वो यहाँ पे जो पोटेंशियल है टूरिज़म उसके ऊपर फोकस करें ताकि जो टूरिस्ट हैं बाहर से यहाँ पे भी आ सके। थैंक यू। कीप शाइन डिस्कवर पुंछ। हमने बहुत एंजॉय किया आज। कैसा लगा सर? कैसा लगा सर? बहुत अच्छा लगा। ये इसका क्रेडिट आपको जाता है। इरफान साहब, आप कहाँ से आए हैं? रजौरी से। कैसा लगा? बहुत अच्छा। चलो किसको? ਇਹ ਰੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਈ ਬਾਈਕ ਰੈਲੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 35-40 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਵੈਂਟ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਇਵੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਡੇਰਾ ਸੰਤਪੁਰਾ ਨਗਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਜਿਆ ਹੈ। ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਯੂਥ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਉਹ ਅਨਐਕਸਪਲੋਰਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਵਰ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਈਏ ਔਰ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਜ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਇਹ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਬਣਨਗੇ। ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕੀ ਨੇ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ, ਇਸ ਨੇਚਰ ਦੇ ਇਸ ਬਹੁਤ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਜੋ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜੋ ਇੱਥੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਯਕੀਨਨ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਥੇ ਸਕੋਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਲਿਆਸ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।